हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? पढ़ रहे हैं आप सब? प्यारे स्टूडेंट, आज की हमारी जो पोम है वो मजहबी पोम है और नाम उसका है द करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। इसके जो पोएट का नाम क्या है? हेनरी वॉटन, जो कि बॉर्न हुए हैं 1568 को और डाइड हुए 1639 को। इज अ 17th century author and scholar. In addition to this, he was also a diplomat. Famous work of him include the character of happy life and a hymn to my God. ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द पॉइंट पे आते हैं, अबाउट द पोएम पे आते हैं। The Character of Happy Life is a poem by Sir Henry Wotton. It's a poem that details on how leading a simple, honest life without the luxuries of the world can still provide happiness and the good grace of God. ठीक है बच्चों, तो now move on next slide. स्टैंजा 1 पे आती है प्यारे बच्चों। इस पोम में हमारे पास 6 स्टैंजा हैं और हर स्टैंजा में 4 लाइन। ठीक है बच्चों, अब हर स्टैंजा में बता रही क्वालिटीज ऑफ हैप्पी लाइफ के बारे में। अब हमारे पास फर्स्ट है, हाउ हैप्पी इज ई बॉर्न और टॉट। कितना खुश है वो इंसान जो पैदा होता है और जानता है दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, कि उसे किसी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करना है, यानी ही डज नॉट वांट डू एनी विल्स वर्क। इसलिए वो बचपन से बताते हैं उसको, वो बहुत खुश होता है कि मैं इस घर में पैदा हुआ हूँ, इस घर में पैदा हुआ हूँ, कि मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी है। ठीक है, नंबर वन नेक्स्ट स्टैंजा यानी इसके रिमेनिंग लाइन पे आते हैं। अब अगली लाइन हमारे पास बता रहे हैं उसके बारे में, फीचर्स हुज आर्मर इज ऑनेस्ट थॉट। ऐसे आदमी के मुहाफिज के अपने नेक ख्यालात होते हैं। आर्मर की मीनिंग क्या होता है? मुहाफिज, प्रोटेक्ट करने वाला। एंड सिंपल ट्रूथ और मोस्ट स्किल, और बेसाख्ता सच्चाई इसकी आला महारत होती है, यानी कि वो सच बोलता है, सिंपल ट्रूथ बोलता है, तो वो उसकी क्या स्किल है, और उसके ऑनेस्ट थॉट क्या उसके मुहाफिज हैं। ठीक है, इस समय वन हमारे यहाँ पे मुकम्मल होगी। ये इसकी एक्सप्रेशन है, सुने गौर से। अ मैन इज लकी इफ ही हैज नॉट टू सर्व अनदर्स विल, ही इज हैप्पी बॉर्न एंड टॉट। इफ ही लीड्स अ फ्री लाइफ ऑफ हिज ओन, he has no need of armor for the protection of his body. His honest thought serves as his armor. The only art of craft he knows is that of simple truth. In other words, he is simple at heart and knows no cunning. Understood this, friends? नंबर वन नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं, और नेक्स्ट स्टैंजा हमारे पास स्टार्ट है बच्चों, और वो कहता है whose passion not his masters are, जिसकी ख्वाहिशात उस पर हावी नहीं होती, यानी ख्वाहिशात उस पर हावी नहीं होती है, अपने ख्वाहिश पर कंट्रोल रखता है वो। whose soul is still prepared for death, और इसकी रूह हमेशा मौत के लिए तैयार रहती है, यानी मौत से डरता नहीं है वो शख्स जिसकी लाइफ के हैप्पीनेस वाला किरदार है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, जो अनटाइड अनटू द वर्ल्ड बाय केयर, दुनिया से बेताल्लुक और बेफिक्र आजाद के, और पब्लिक फेम और प्राइवेट ब्रेव, अब हमें शोहरत कैसे हासिल करें या लोग क्या कहेंगे उसको कोई फिक्र नहीं है कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। ही जस्ट वरीज अबाउट हिमसेल्फ, ही जस्ट फॉलो द गॉड रूल रेगुलेशन। ठीक है, नाउ आते हैं इसके एक्सप्रेशन पे आते हैं। अ लकी मैन एंड अ हैप्पी पर्सन इज वन हु इज नॉट अ स्लेव टू हिज पैशन, whose soul is always prepared to receive death, and who is not tied to the world by care of public fame or the good opinion of others. In other words, he has no worry to earn public fame or the good opinion of others. उसको कुछ है ही नहीं फिक्र। ये थी स्टेटमेंट नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन बच्चों। I think you are getting it my points. Thank you student. Now move on next stanza. स्टेटमेंट नंबर 3 पे आता हूँ मैं। ये देखिए बच्चों, गौर से सुने। Who invites none that chance doth raise, वो किसी से हसद नहीं करता कोई किस्मत से अच्छे मुकाम पर पहुंचा हो। नॉर वाइज हु नेवर अंडरस्टूड, या मकारे से या और से भी ये समझ नहीं आती कि, यानी उसके सामने कोशिश अच्छी मेहनत से काम करके पहुंचते ऊपर, ही डजंट वरी अबाउट, जलता नहीं वो, और कोई उसके सामने उसके 2 नंबर काम से आगे बढ़ जाए, अमीर हो जाए, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आगे बात है, हाउ डीपेस्ट वंड्स आर गिवन बाय प्रेज, ऐसा शख्स जो हैप्पी लाइफ गुजारता है, चापलूसी से कितने गहरे जख्म मिलते हैं। कोई अगर चापलूसी करता है, तारीफ करता है, उसको चोट पहुंचता है, तकलीफ पहुंचती है। नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, उसको दुनिया के असूलों की कोई फिक्र नहीं है, हाँ अच्छे रूल को फॉलो करता है वो। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है बच्चों।
The truly happy person is one who does not feel jealous of others. He does not feel jealous of those who rise in the life by chance or through the use of the wicked means. He doesn't know how deep wounds are caused by false praise and simple words. He never indulges in false praise of others. He rules over others not by virtue of any political power but by the goodness of his heart. ठीक है बच्चों, नाउ आगे बढ़ते हैं, स्टैंजा 4 पे आते हैं. नाउ स्टैंजा 4, हु हैड हिज लाइफ फ्रॉम आर रूमर्स फ्रीड, यानी उसकी जिंदगी में अफवाहें नहीं होती हैं. रूमर के में क्या होते हैं? अफवाहें. हुज कॉन्साइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, और उसका ज़मीर उसकी मजबूत पाना गाय, यानी कि उसको कोई बुरा काम करता है बच्चों तो वो उसकी ज़मीर रोकती है उसको कि ये काम आप नहीं करेंगे आप. आगे बढ़ते नेक्स्ट पे. Whose state can neither flatters fate nor rain make oppressor great. इनकी हालत कभी चापलूसों को फायदा नहीं पहुंचाती, यानी कि हैप्पी लाइफ गुजारने वाले शख्स की लाइफ से चापलूसों को फायदा नहीं पहुंचता, और ना कोई अगर जालिम मर जाए तो उसको फर्क पड़ता है. इसकी लाइफ हैप्पी लाइफ है. The poem points out that he would also be happy if he were to lead a life free of rumors and has a solid truthfulness. He can turn to when in need. He must also not fall prey to dull flattery and must be cautious of oppressor who seeks to ruin him and make themselves great. ठीक है बच्चों, now move on, stanza number 5 पे आते हैं. ठीक है. Who doth late and early prayer, जो सुबह सवेरे से रात, हैप्पी शख्स जो है वो सुबह से लेकर रात तक अल्लाह की इबादत करता है. More of his grace than gifts to land, खुदा की रहमत के लिए ना कि तहफ़ हासिल करने के लिए. ठीक है, यानी वो चाहता है गॉड की रहमत मुझ पर नाज़िल हो, ना कि तहफ़ मुझे मिले. And entertain the harmless day, और पुरसुकून दिन गुजारता है. हार्मलेस में क्या होता है? पुरसुकून आराम दिन. With a religious book or friend, अपनी मजहबी किताब या अच्छे लोगों के साथ. क्या लिखा हुआ है? A man who prays to God every hour of the day gets true happiness. Of course, he prays to God not for any material gains, but for mercy. He spends his day in harmless pleasure. He entertains himself by reading a religious book or spending time in the company of a friend. Okay, student, now move on to the last stanza. stanza number 6 पे आता हूँ मैं, और लिखा हुआ है, the man is freed from servile bands of hope to rise or fear to fall. ऐसा इंसान अपने गुलामाना ख्यालात से क्या होता है? आज़ाद होता है. गुलामी वाली बात सोचता भी नहीं है. ऊंचाई पर पहुंचने की उम्मीद हमेशा वो काम करते जिससे वो ऊंचाई पर पहुंचे अप, और कभी वो काम नहीं इसका जिससे वो जवाल पजीर हो जाए. डरता है वो जवाल से. Lord of himself, though not of land, अपने ख्वाहिशात का मालिक होता है, अगर चाहे उसके पास प्रॉपर्टी नहीं होती दुनिया में फिर भी वो खुश व खुर्रम रहता है. एंड हैव नथिंग येट एट ऑल, और उसके पास कुछ ना होते भी सब कुछ होता है. कितनी प्यारी बात की वजह से पोएट ने इस लाइन आखिरी लाइन के अंदर. A man who has all these qualities is free from all hopes and fears. He has no hopes to rise or no fear to fall. He has complete self-control. He may not be the master of lands, but he is complete master of himself. He may not any material possession, yet he lives as if he has everything. In other words, he leads a complete contented life. ठीक है बच्चों, तो ये हमारी थी पूरी पोम की एक्सप्लेनेशन which I gave you in simple way. I hope you understood very well. ये आप पॉइंट्स बच्चों है रिमेंबर, ये आप नोट कर लेगा. ठीक है, देख ले पॉइंट, आप खुद पढ़ेंगे पूरी पॉइंट से जो सेंसेस में पॉइंट बना दिए बच्चों. The person is indeed very happy who has been taught from his birth not to be slave to another's will. Point 2 क्या, he is free master of his passion and desire. He doesn't feel jealous of those who have risen high, either by a stroke of good future fortune or by employing underhand method. The art of flattery is totally unknown to him. This is not afraid public opinion and does not what he thinks proper and right.
He depends upon plain truth to fight the battle of life. He is happy indeed to pray to God day and night. He is the master of his soul and will though he doesn't own property. ठीक है बच्चों, ये पॉइंट टू रिमेंबर है, ये छोड़ समझिए आप। ये ब्लैंक से बच्चों देखिए, अ स्ट्रॉन्ग रिट्रीट फॉर हैप्पी मैन इज हिज, ऑफ कोर्स क्या है बच्चों, कॉन्सेंस है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, अ हैप्पी मैन केयर्स मच अबाउट हिज करेक्टर, आई थिंक करेक्टर। अ हैप्पी मैन्स आर्मर इज हिज डैश थॉट, ऑनेस्ट थॉट। A happy man's days are harmless. Dash is the utmost skill of an honest man. Simple truth. A happy man doesn't serve another's will. A happy man's soul is always prepared for death. According to the poet, the deepest wounds are always given by Christ. ठीक है बच्चों, ये हमारी थी पोम के एमसीक्यूज जो मैंने आपको लेक्चर दिया, वही एमसीक्यू सामने आपके आ रहे हैं। यू नीड टू मेक प्रैक्टिस टू मच, ओके। ये इसके एमसीक्यूज है बच्चों, ब्लैंक्स हैं जो आपके बुक में सॉल्व करने का आया हुआ है, तो देख लीजिएगा आंसर्स। ये से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आते हैं आपके। देन ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत शुक्रिया।